Picking up the tough questions in relevant costing. ठीक है, चलो. Albrecht has received a request to make a special version of one of its products. The special version will use 2000 units of material X. Albrecht no longer uses material X, but there are 2000 units left in inventory, purchased at 4 per unit. ठीक है. The special version will use 2000 units of material X. So, what is the material required? 2000 units. ठीक है. Then, uh, but these units are already. Special version will use 2000 units of material X. Albrecht no longer uses material X, but there are 2000 units left in inventory, purchased at 4 per unit. ठीक है. So, purchase cost per unit 4. ठीक है. Total purchase cost 2000 units into 4, which is 8000. ठीक है. And this is sunk cost already incurred. The current purchase price is 4.75 per unit. Albrecht believes it could sell material X for 3 per unit. However, material X is similar to material Y that is currently in use by Albrecht and can be purchased for 6.5 per unit. It could use material X in place of material Y. However, it would cost 2.75 per unit to modify material X so that it could be used in place of material Y. ठीक है. First of all, this sunk cost is not relevant for decision making. ठीक है. Now, what happens? The current purchase price is 4.75. Albrecht believes it could sell material X for $3 per unit. So, if material X is sold, proceeds are how much? 2000 units into 3, that is 6000. ठीक है. If material X is sold, these are the proceeds. However, material X is similar to material Y that is currently in use by Albrecht and can be purchased for X. Can be purchased for 6.5. If it uses X in place of Y, it would cost 2.75 per unit to modify. ठीक है. तो basically what we are saying is कि अगर आपने instead of Y, if you use X, ठीक है. So, if X is used in place of Y, then company will not have to pay 6.50 per unit to company will not have to pay 6.5 per unit to purchase Y. So that means there will be a saving of 6.50. ठीक है. And company will have to spend 2.75 per unit to purchase, sorry, to modify. ठीक है. So, net cost for Y, sorry, net cost स्लैश सेविंग. ठीक है. 6.5 का सेविंग होगा, 2.75 का कॉस्ट होगा. ठीक है. सो नेट सेविंग कितना हो जाएगा? नेट सेविंग विल बी 6.5 minus 2.75. How much is that? Tell me. 3.75. 3.75 per unit. ठीक है. And this is 3 per unit. Now, what is, see, यहाँ पे opportunity cost is what basically we are trying to understand. What is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of the next best alternative. ठीक है. Option 1, sell material X. On 3. Option 2, use X in place of Y. ठीक है. Net saving 3.75.
सो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज 3.75. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. सो रेलेवेंट कॉस्ट इज 3.75. ठीक है. Yes, sir. अब आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लास, राइट? वी हैव लुक्ड एट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो. अब एक और देखते हैं विच इज अबाउट लेबर. ये था मटेरियल का. एक क्वेश्चन देखते हैं विच इज अबाउट लेबर कॉस्ट. ठीक है, चलो. इसको देखो. अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर कंसिडरेशन विच रिक्वायर्स 600 labor hours to complete. There are 350 hours of spare labor capacity. The remaining hours for the contract can be found either by weekend overtime working paid double the normal rate of pay, or by diverting labor from manufacture of product QZ. If the contract is undertaken and labor is diverted, sales of product QZ will be lost. Product QZ, takes 3 labor hours per unit to manufacture and makes a contribution of 12 per unit. The normal rate of pay for labor is $9 per hour. What is the total relevant cost of labor for the contract? अब टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आपको पूछा है. ठीक है, लेट्स गो लाइन बाय लाइन. सो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना है? 600. 600 आवर्स. स्पेयर आवर्स अवेलेबल? 350. 350 आवर्स है मेरे स्पेयर आवर्स. सो टाइम एक्चुअली रिक्वायर्ड इज, सी स्पेयर आवर्स है मतलब, व्हाट द स्पेयर आवर्स मीन, लेबर फ्री बैठा है बट उनको सैलरी फुल जा रहा है. ठीक है, इज वन मोमेंट. हाँ, ठीक है. स्पेयर आवर्स अवेलेबल कितना है? 350 आवर्स स्पेयर टाइम है आपके पास. स्पेयर टाइम मतलब, सी यू आर, लेबर बैठा है, खाली बैठा है. यू आर एनी वे पेइंग देम फॉर दैट मच टाइम, बट दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज यू डोंट हैव सो मच वर्क. सो वेन यू डिप्लॉय दोज, वेन यू मेक देम वर्क फॉर दैट मच टाइम, यू डोंट हैव टू पे देम एनीथिंग एक्स्ट्रा. है ना? बिकॉज वो तो आप ऑलरेडी उनको पे करो, तो दैट कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. यू आर एनी वे पेइंग देम. सो what is the additional hours for which labor is required? 600 minus 350 is equal to 250 hours. ठीक है. They can be found either by weekend overtime working paid double the normal rate, or by diverting labor away from product QZ. When you divert them away from QZ, तो क्या होगा? When labor is diverted away from QZ. ठीक है. अब if the contract is undertaken and the labor is diverted, sales of product QZ will be lost. Product QZ takes 3 labor hours per unit to manufacture and makes a contribution of 12 per unit. So, if you don't make product QZ, you will end up losing on a contribution of 12 per unit. ठीक है, you will end up losing out on a contribution of 12 per unit. What else is happening in this case? But one unit takes 3 labor hours to make. So when you divert labor from QZ to the current contract, you end up losing out on a contribution of 12 by 3, which is 4 per hour. Do you agree कि when you don't, so आपने
लेबर को हटाया फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट जेड एंड यू आस्क देम टू मेक द अदर प्रोडक्ट, उस केस में क्या होगा? इन दैट केस यू विल लूज आउट ऑन अ contribution of 12 per unit, ठीक है? बट वन यूनिट टेक्स हाउ मच आवर्स टू मेक? इट टेक्स 3 hours to make. So when you divert labor from QZ to the current contract, you end up losing out on 4 per hour. ठीक है? Now we need 250 hours of labor. ठीक है? So if we divert labor from product QZ into this contract, we will end up losing on an opportunity to earn a contribution of 250 into 4. That is how much? 1000. 1000. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। तो सर नॉर्मल। एक डाउट था इधर। हाँ बोलिए। सर इसमें लाइक हम ऐसे भी कर सकते हैं 250 आवर्स डिवाइडेड बाय मतलब 3, तो उससे हमारे यूनिट्स आ जाएंगे, उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से हम्म। 1000 ही रहा है उससे भी आंसर। हाँ, आंसर तो वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई हाँ कर हाँ, दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। नो प्रॉब्लम देयर। ठीक है, आप यस एक तो ये होगा, यू विल लूज आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000 एंड फॉर एवरी आवर वर्कड we need to pay how much more? We need to pay 250 into 9, that is 2250 more. है ना? Why 250 into 9? Normal rate of pay is 9 per hour. ठीक है? So total relevant cost is 1000 plus 2250, that is 3250. ठीक है? Now नेक्स्ट वन, मतलब ये तो एक पार्ट हो गया ना, बट द यस रिमेनिंग आवर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाउंड ईदर बाय वीकेंड ओवर टाइम वर्किंग पेड डबल द नॉर्मल रेट ऑफ पे और बाय डाइवर्टिंग लेबर। अब वीकेंड ओवर टाइम वर्क, ठीक है, व्हाट विल बी द रेट पर आवर? रेट पर आवर विल बी 9 इंटू 9 पर आवर इंटू 2, दैट इज 18 पर आवर। ठीक है, सो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज, sorry, total cost, not relevant cost. Total cost is 250 into 18. 18 fives are 90, carry 9. 18 twos are 36 plus 9, 4500. यहाँ पे 3250, यहाँ पे 4500. Now you are spending the amount. What is lower? 3250 is lower. ठीक है, so what is the total relevant cost? 3250 is the total relevant cost. ठीक है, यस ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू बी अट्यून्ड विथ व्हाट द क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन इज। अगला वाला जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, द स्टडी हब कॉल्स इट एक्सपर्ट लेवल। लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक एन एक्सपर्ट लेवल क्वेश्चन। A machine is no longer used by a company. It could be sold now for net proceeds of 300. Its only other use is on a short-term contract which is under consideration. The variable running cost of the machine during the contract period would be 400. On completion of the contract, the machine would have no realizable value and cost 150 to dismantle and remove. ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बताना है व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर यूज्ड बाय अ कंपनी, इट कुड बी सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ 300. Its only other use is on a short term contract which is under consideration, which means if you use the machine for the short term contract, you will not be able to sell it. And because you will not be able to sell it, you will lose out on an opportunity to earn how much? Lose out on an opportunity to earn 300. ठीक है, then variable running cost of the machine during the contract period would be 400.
आप उसको चलाएंगे, उसका रनिंग कॉस्ट होगा 400, दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट। एंड इफ यू use this machine at the time of completion of the contract, there is no realizable value and it costs 150 to dismantle and remove. So cost of dismantling कितना है? 150, 850। 850 is the relevant cost। ठीक है, मुझे तो डिफिकल्ट नहीं लगा यार। आई डोंट नो व्हाई द स्टडी हब कॉल्स इट एक्सपर्ट लेवल। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, कुछ खास तो है नहीं। इन दैट पीएम रिकॉर्डिंग ना दैट यू गाइस हैव, उसमें सेक्शन बी के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग वाले जो लेक्चर्स है ना, यू विल फाइंड अ अच्छा। लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन सेक्शन बी सॉल्व्ड देयर। रेलेवेंट कॉस्टिंग का ना, आई उसमें सिप कंपनियां ऐसा करके कोई क्वेश्चन है, वहां पे वो वुड पेंटिंग और पता नहीं रीवर्क, इट्स ऑल ऑफ दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आप देखना, हाँ, डोंट मिस आउट ऑन दोज। ओके सर। Yeah. ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म रेलेवेंट कैश फ्लो? The benefit which would have been obtained from the best alternative foregone. The difference in future operating cash flow resulting from a decision. All future cash flows that cannot be avoided. All cash flows including financing cash flows arising from a project. क्या होगा? थियोरी टाइप है। Benefit which would have been obtained from the best alternative foregone. That is an opportunity cost, which is a type of Yes. relevant cost. Okay. Then a future cash flow that cannot be avoided. Something that cannot be avoided is irrelevant for decision making. Then all cash flows, including financing cash flows arising from a project. See, there could be certain non-incremental cash flows. There could be some unavoidable cash flows. They are not relevant for decision making, right? So basically, when I talk of point D, they are talking about all cash flows. All cash flows are not relevant. Certain cash flows are relevant. तो इसका तो आंसर A, C and D very clearly are incorrect. Difference in future operating cash flows resulting from a decision. Option A versus option B, the additional cash flows that you would get because of taking a particular decision, those are relevant for decision making. Cash flows which are common under, all the circumstances, those are not relevant for decision making। ठीक है, अब एक ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, थियोरी टाइप क्वेश्चन। लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। Indicate by clicking on the relevant boxes whether each of the following statements made about short term decisions are true or false। ठीक है, joint costs are relevant in decisions about whether to sell a joint product at the split off point or after further processing। द रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज इन, मैंने जॉइंट प्रोडक्ट का ना सबसे लास्ट में कराया है रिकॉर्डिंग्स में। इट्स द वेरी लास्ट सेशन बाय द वे। रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज इन डिसीजंस रिलेटिंग टू operating of internal service departments or the use of external services are the differential costs between the two options। बताइए। Joint costs are relevant in decisions about whether to sell a joint product at the split off point or after further processing। See, joint costs are not relevant because they are anyway incurred. Costs which are incurred after the split off point are relevant। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। And relevant costs and revenues in decisions relating to operating of internal service departments or the use of external services are differential cost between the two options। आपको अगर याद होगा तो in the class we have done that one question, whether you will do कुछ document processing है, whether you will do it in house or whether you will outsource it। तो वहां पे the decision making point is not the costs which are commonly incurred, but those costs which are different under the two options। ठीक है, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। ठीक है, ओके सर। नाउ आई हैव
I think I have done this question in the recordings. रेलेवेंट कॉस्ट, ये फ्रूट वाला क्वेश्चन किया है, आप देखना वीडियोस, उसमें ये फ्रूट वाला क्वेश्चन है. सो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस अगेन बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर. तो जो है वो रिपीट दो दो बार सेम चीज करने में आई डोंट सी द पॉइंट. यस, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. इसमें आई वुड वांट यू टू अप्लाई योर माइंड. वो क्वेश्चन एक्चुअली ना मैंने दो बार सॉल्व किया है, वो जो फ्रूट वाला क्वेश्चन आई शोड यू ना ऑन स्क्रीन. इट्स देयर इन द रिकॉर्डेड सेशंस. The next one I would want you to apply your mind to. The study hub calls it difficult. Let's see how you find it. ठीक है, चलो. Take 2 to 3 minutes, read the question, get your thoughts in place, then we'll do it together. ठीक है. Now, what is the question? B company operates a production process which generates a contribution of 4 per hour. Wages are paid at 7 per hour and labor is fully utilized. During busy period, workers are offered the chance to work overtime, which is paid at 10 per hour. However, workers are currently refusing to work overtime because of an industrial dispute. B company has just received an additional order which must be fulfilled immediately, which will require 10 hours of labor to fulfill. What is the relevant cost of labor फॉर द एडिशनल ऑर्डर? ठीक है, अब इसको कैसे करना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेदर देयर इज एनी स्पेयर कैपेसिटी यहां पे. ड्यूरिंग बिजी पीरियड्स वर्कर्स आर ऑफर्ड अ चांस टू वर्क ओवर टाइम. बट उसके पहले ना, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दे हैव रिटन लेबर इज फुल्ली यूटिलाइज्ड. ठीक है, सो लेबर इज fully utilized. So, no cost, sorry, labor is fully utilized. So, no spare time. ठीक है. During busy periods, workers are offered a chance to work overtime, which is paid at 10 per hour. However, workers are currently refusing to work overtime. ठीक है. Workers are refusing to work overtime. That means they will have to be diverted away from the current process, from the current production, and deployed here, है ना? So, and अच्छा, when they are diverted away from current production, what will happen? When they are diverted away from current production, the company will lose out इमोशन. on an opportunity to make contribution of 4 per hour. Correct? है ना? It will lose out on an opportunity to make a contribution of 4 per hour. Plus, you will have to pay normal wage rate that is always considered. So, total relevant cost is 10 hours into 7 per hour labor cost plus 4 per hour opportunity cost. कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा. टोटल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर एडिशनल ऑर्डर इज 110. यहाँ पे द फैक्ट सी, यूजुअली दे स्पेसिफिकली मेंशन कि अरे लेबर विल हैव टू बी टेकन अवे फ्रॉम दिस प्रोसेस, पुट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ये सब वो बोलते हैं. यहाँ पे दे डिड नॉट से दैट, दे जस्ट सेड दैट लेबर इज फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड दे मेंशन कि राइट नाउ दे आर नॉट विलिंग टू वर्क ओवर टाइम. तो दे विल हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ करंट प्रोसेस एंड पुट इन दिस प्रोसेस. Now, that is why probably the study hub calls it an expert level question. Because straightforward, otherwise, बोल देते हैं. In the question, they mention कि अरे you are removing the
लेबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रपोजल एंड देन यू आर एडिंग इट इन, मतलब वहां से हटा के आप उसको यहाँ पे ऐड कर रहे हो. बट इन दिस सिचुएशन दे हैवंट सेड दैट. दे जस्ट सेड कि दे आर नॉट विलिंग टू वर्क ओवर टाइम. अब विलिंग टू वर्क ओवर टाइम नहीं है तो करंट प्रोसेस को रोक के आपको वहां से उसको हटाना पड़ेगा और इधर आपको उसको डालना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज हाउ द थॉट प्रोसेस हैज टू वर्क. इट माइट नॉट बी गिवन डायरेक्टली एवरी टाइम. ठीक है, चलो. सर जो फुली यूटिलाइज्ड है और ओवर टाइम है वो मतलब अलग चीज है ना। वो तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि उनको ओवर टाइम वर्क नहीं करना, तभी हमने शायद 10 into 10 नहीं करा मे बी। हाँ, ओवर टाइम उनको वर्क नहीं करना, इसका द बिगेस्ट पॉइंट इसकी वो जो ओवर टाइम प्रीमियम और वो सब है, वो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, है ना. ओके सर, नहीं अगर सर ओवर टाइम अगर लिखा होता, मतलब वो लाइन नहीं लिखी होती कि क्योंकि डिस्प्यूट हो रहा है और दे डोंट वांट टू डू ओवर टाइम, तब हम 10 into 10 करके $100 ले सकते थे रेलिवेंट कॉस्ट। हाँ, उसको ले सकते थे, फिर इन दैट सिचुएशन इट वुड हैव बीन डिफरेंट. ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर। ओके, चलो, नेक्स्ट. Relevant cost of material Z to fulfill the customer order. A company needs 400 kg of material Z to fulfill a customer order in 1 month time. It currently has no material Z in inventory. The current purchase cost of material Z is 20 per kg, and this is expected to rise to 24 per kg in 1 month time. Material Z is perishable, and normally 20% of the stored material is lost per month. Material Y is able to be converted to material Z at a cost of 4 per kg. The company expects to have 20 kg of material Y in inventory in 1 month's time. Material Y could be sold as is for 18 per kg or could be converted into 200 kg of material Z. Material Y is not perishable. आपको पूछा है टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. ठीक है, सो कैसे करेंगे? नाउ दिस इज थोड़ा सा ट्रिकी है. क्यों है थोड़ा सा ट्रिकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक ऑफ दिस सिचुएशन, यहां पे देखो, एक तो वो मटेरियल श्रिंकेज वाला सिचुएशन दे हैव टोल्ड यू, राइट, दैट द मटेरियल श्रिंक्स. अब व्हाट ऑल कैन यू डू? व्हाट आर द थ्री ऑप्शंस और टू ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू? ऑप्शंस अवेलेबल, क्या है आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल? ऑप्शन वन, बाय मटेरियल जेड नाउ. ओके, if you buy now, you will lose out on 20% of the material. How many kgs do you need? You need 400 kgs. ठीक है, you need 400 kgs. So if you buy now, you will lose out on 20% of the material. So if you buy 100 kg, you will lose out 20 and you will be left with 80. You need 400 kgs. So after loss of material, you should still have 400 kgs with you. So how many do you need to buy? ठीक है, buy loss left, assumed. Buy 100, loss 20, left with 80. Actual, एक्चुअल कितना है? चाहिए 400, तो खरीदेंगे कितना? 500. ठीक है, so you will buy, sorry, this is actual. 500 you got by cross multiplication. 500 is 400 into 100 by 80.
Are you with me? यस सर। Yes. ठीक है. So if you buy now, the price is 20 per kg, है ना? So cost if purchased today 500 kgs into 20 per kg कितना हो जाएगा? 10,000. Then option 2, buy material Z after 1 month. ठीक है. When you buy material Z after 1 month, you have to buy 200 kgs of material, sorry, 400 kgs of material Z. Cost is 24 per kg. ठीक है. Cost of material Z is 400 into 24, 9,600. ठीक है. थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास? सर ये नहीं कर सकते लाइक 400 अभी खरीद लें हम्म. तो उसका हमारा लॉस हो जाएगा 20%, तो 320 बचेगा, और फिर हम्म. 1 मंथ के बाद 80 और खरीद लो तो। करके देख तो कितना आता है, बता मुझे कितना आता है. सर अगर 400 अभी ले लिया तो 400 इंटू 20 हो गया 8000, हम्म. और फिर हम उसमें से माइनस अगर हम करेंगे 20% तो कितना होगा? 80 इंटू. 80 इंटू 24, 1920 प्लस वो वाला कितना था, 8000 था, हम्म. 9920। ओके. ओके. Now, have a company needs 400 kg to fulfill a customer order in 1 month time. Now, what you have actually said, Ishant, opens up a completely different thought process. ये आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं था, बट ये पॉइंट बराबर है यार, गलत नहीं है तेरा पॉइंट. यू कैन डू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली what the way they have approached this answer is as if you can you cannot buy in parts, you can buy in full. So that is the approach they have taken. What you are saying is not wrong. वो भी एक ऑप्शन है. ठीक है. यस सर। उसमें लेकिन क्या प्रॉब्लम है? Why they don't go for it? See, the way you said buy 400 now and then let 80 get lost and then I'll buy 80 later. Somebody might say, you know what, buy say 300 for example, 380 right now, and then 20 will be lost, and then buy the remaining amount later, something like this. So multiple quantities के multiple options will get created. तेरा वाला क्या था? 480 था. somebody might say कि यार ये 380 खरीदो. 70, इसका 20% इज लॉस्ट. ठीक है. 304 बचेगा. एंड देन हाउ मेनी मोर डू यू बाय इन द फ्यूचर? यू नीड 400 kg. यू बाय 10 नहीं, यू बाय 96 इन द फ्यूचर. 96। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास. दिस इंटू 20, दिस इंटू 24, 8384 आया, राइट? सो देर आर मल्टीपल सच ऑप्शंस अवेलेबल. Then finding out one perfect option which keeps the cost to a bare minimum, that calculation might get very difficult because then आपको इतने सारे options को evaluate करना पड़ेगा, right? यस सर। Which is why uh, they have not evaluated that. But तेरा question बहुत interesting है. You are the first person ever to ask this. And good thinking. मतलब ऐसा irrelevant नहीं है, अच्छा thought है. But now you know why we can't do it. यस सर। ठीक है. मल्टीपल। Material Y is able to be converted to material. Just a question here, like how Ishan suggested, the answers will also differ, no, sir? Yeah, which is why we are not evaluating those options. Because then there will be like 10,000 different alternatives available. And to decide which one is the lowest means you have to actually calculate the cost of 10,000 such options, which is an impossible task. Now, last one. Material Y is able to be converted to material Z at a cost of 4 per kg. The company expects to have
200 kg of material Y in inventory in 1 month's time. Material Y could be sold as it is for 18 per kg or be converted into 200 kg of material Z. Material Y is not perishable. अब मटेरियल Y के साथ आप क्या क्या कर सकते हो? ठीक है, कन्वर्ट मटेरियल Y टू मटेरियल X. What will be the cost incurred? प्रोसीड्स फोरगॉन कितना होगा? 18 प्लस proceeds foregone would be 18 and conversion cost will be 4 per kg. 22. But this is only for 200 kg na? This is for 200 kgs. So cost incurred 200 kgs into 22 per kg कितना होगा? 4,400. 4400 and by remaining 200 kgs after 1 month तो वो हो जाएगा 200 into 24 4800. Total cost will be 4400 plus 4800. Correct? 3,400. Yes, sir. 9200, 9200, 9600, and 10,000. What is the total relevant cost of material Z to complete the order? The cheapest one should be the relevant cost, which is 9200. Right? मतलब काफी मतलब अलग क्वेश्चन है. ठीक है. And these were, all the moderate to difficult category questions in this one moment.